हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आम कथा कि केमिति ओएस प्रिलिम्स फास्ट अटेम्प्ट रे क्लियर हो पारियो। बहुत गुड़े मिथ चलची मार्केट रे कि इट्स नॉट पॉसिबल टू क्लियर ओएस प्रिलिम इन द फास्ट अटेम्प्ट। प्रथमे तुम्हें देखिबा पई देबा दरकार, व्हिच आई डोंट बिलीव बिकॉज आई माई सेल्फ हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. The prelims I have cleared in the first attempt, so I do believe that it can be cleared. एटा हो पारिबो, केमिति हो पारिबो सेटा हम एग्जाम रे देखिबा. So prelims can be cleared. So how I cleared and what are my sources to clear this examination in the first attempt. So चार्टा पिलर थाए कहुए when you are giving prelims. Generally prelims जो दौच चार्टा पिलर थाए प्रिपेयर करने जो थे ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन पाखापाखि आसे. देयर इज स्टैटिक प्लस करंट अफेयर. यही चार्टा सब्जेक्ट रु 70% क्वेश्चन आसबार चांसेस थाए. एवरी ईयर आसे, सब ईयर 70% क्वेश्चन आसे. तो जदि आम एटा को प्रिपेयर करवा तो आम मैक्सिमम क्वेश्चन करिपरिबा. आम कौन करूँ ना लेस मैक्सिमम कर आम कौन करूँ लेस इम्पोर्टाट सब्जेक्ट भितर आम अधिका एफर्ट दो जोटा कि लेस इम्पोर्टाट बट आम दो मोर एफर्ट जहाँफल कौन हुए आम लेस क्वेश्चन कर एग्जाम क्लियर हुए. सिंपल. तो यही जो चार्टा सब्जेक्ट अच्छी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी हार्ड सब्जेक्ट से पिला कौन करती स्किप करती, ठीक से पढ़ती. जब ठीक से न पढ़ती तो कौन भी एग्जाम क्लियर हुए. आम आर्ट एंड कल्चर बहुत इम्पोर्टाट दो. हमें अलग सब सब्जेक्ट में देखा कौन सब्जेक्ट लेस्ट इम्पोर्टाट आम कम इम्पोर्टान्स देवा दरकार. हमें ताकू कम इम्पोर्टान्स देकी आपको अधिका इम्पोर्टान्स दे पारिबा. सो लेट्स टॉक अबाउट सोर्सेस कि सोर्स कौन हवा दरकार. ये जो चार्टा सब्जेक्ट चार्टा सब्जेक्ट या भितर बहुत वास्ट. चार्टा सब्जेक्ट लगुच कि चार्टा सब्जेक्ट ही बहुत वास्ट. आपको जब आम क्लीयर करुचे तो आम कहीपर कि आम गोटे भल पोजिशन रे अच्छे जो आम क्लीयर करें जब आम भलसे रिवाइज कले अलग सब जिन कले. तो सोर्सेस कौन हवा दरकार. लेट्स फास्ट टॉक अबाउट ज्योग्राफी. बहुत इम्पोर्टेंट. ज्योग्राफी आउ एनवायरनमेंट गोटे टाइप रो. फास्ट आम ज्योग्राफी कथा हवा. ज्योग्राफी रे कौन इम्पोर्टेंट. ज्योग्राफी टू टाइप्स. वन इज इंडियन ज्योग्राफी, second one is the physical geography. One is Indian geography and second one is the physical geography. तो इंडियन आउ ओएस रे गोटे है ओडिशा ज्योग्राफी. इंडियन ज्योग्राफी होची 11th क्लास रो इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी. मोर देन एनफ. जो तुम आपको ठीक से पेज टू पेज लाइन टू लाइन जदि पढ़ी दौच रिवर सिस्टम ड्रेनेज होगला, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया होगला, देन यू आर इन द टॉप ऑफ द पिरामिड. बट जनरली आम आपको फोकस करूँ आम कौन सी कोचिंग नोट रे फसी जाऊ जो फल आम आपको मिस कर दो जो थी कि ओपीएससी क्वेश्चन बनाए. तो आम सोर्स को ही मिस कर दो. आमको टीचर अलग कहते कि सीनियर कहते जो मैंने क्लियर करना से कथा आम पढ़ी जाऊ. फिजिकल ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी से 11th क्लास एनसीईआरटी एनफ. जो तुम 11th क्लास एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी दौच देन ज्योग्राफी रे आउ किसी पढ़ा ही ना. प्लस क्लाइमेट लो जब पढ़ा जीसी लिंग पढ़ी पार. जीसी लिंग गोटे बुक आसे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े ओनली क्लाइमेट लोजी आउ किसी तार ठीक से ओनली क्लाइमेट लोजी चाहिए जीसी लिंग पढ़ी पार.
एतिक जब तुम करदौछ देख प्रिलिम्स 11th क्लास रो 2टा एनसीईआरटी मोर देन इनफ। जो मेन्स देखुच से मेन्स 11th क्लास एनसीईआरटी प्लस 12th क्लास रो एनसीईआरटी ज्योग्राफी ओनली एतिकी पढ़ीदेला पर आउ किसी ज्योग्राफी पढ़िया ही ना। आम सबिंद्र सिंह बसी पढ़ू डीआर खुलार पढ़ू से ऑप्शनल आमको प्रिलिम्स क्लियर कर व्हाट इज आवर मोटिव वी मोटिव इज टू क्लियर प्रिलिम्स नॉट टू बिकम ए पोस्ट ग्रेजुएट और ए होल्डर ऑफ पीएचडी आमको से सब करवार नहीं आमको प्रिलिम्स क्लियर कर जमती आम प्रिलिम्स क्लियर कर प्रिलिम्स केमती क्लियर हम सिंपल गोटे सोर्स रखा पड़ो ताको बार बार रिवाइज करने पड़ो रिविजन इज द की टू सक्सेस। सो लेट्स टॉक अबाउट अदर सोर्सेस हिस्ट्री ओडिशा ज्योग्राफी तुम किसी फॉलो कर कौन से गोटे कोचिंग नोट नहीं आस ताको ही फॉलो कर बही को जाओनी केते कोचिंग अच्छी ओडिशा रे। सेकेंड इज हिस्ट्री हिस्ट्री भी 3 प्रकार विभाग एंशिएंट मेडिएवल एंड मॉडर्न। सबुठ इम्पोर्टाट आ भितर मॉडर्न ताठू कम इम्पोर्टाट एंशिएंट एंड मेडिएवल सबुठ अधिक इम्पोर्टाट मॉडर्न। मॉडर्न कौन पढ़ी पार गोटे सोर्स जोटा तुमको सुविधा लगे आगुरी आसूला कम स्पेक्ट्रम जोटा आसूला आगुरी छोट आसूला बट ए बहुत बड़ हो गला बहुत मोटा है रिवाइज करने बहुत असुविधा तुम आइदर स्पेक्ट्रम पढ़ी पार व्हिच इज गुड सोर्स बहुत छोट बहीटे फॉन्ट साइज भी ठीक अच्छी तो बहुत मोटा बहीटे तो विपिन चंद्र गोटे रु अधिका नहीं जहाँ पढ़ा हम गोटे पढ़ा हम बार बार रिवाइज हो जेपर्यंत तुम बुक जेपर्यंत कलरफुल देखा जाए हाइलाइटर लगे देन सक्सेसफुल तुम हो जेपर्यंत बुक कलरफुल न हो से तुम रिवाइज भलसे करन। मेडिएवल सतीश चंद्र एनसीईआरटी सतीश चंद्रा एनसीईआरटी आठू आगु को जीवार कौन प्रकार आवश्यकता नहीं क्वेश्चन आसोनी अधिक आम एफर्ट कहीं दवा एनसीईआरटी से आर एस शर्मा एनसीईआरटी बहुत किसी माने एवरीथिंग बियॉन्ड जीवा किसी दरकार नहीं बियॉन्ड जीवार कौन प्रकार आवश्यकता नहीं। लेट्स क्लियर इट। सेकेंड पिलर आम कंप्लीट हो गला ज्योग्राफी फास्ट गला। थर्ड सोर्सेस पॉलिटी रू सब वर्ष 20 क्वेश्चन आसे मिनिमम 15 क्वेश्चन आसवा सियोर पॉलिटी रू 15 क्वेश्चन आसवा सियोर पॉलिटी गोटे सोर्स समस्त जना अच्छी व्हिच इज मोर देन इनफ इज लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ार अच्छी लक्ष्मीकांत अलग किसी भल सोर्स ना मार्केट टिल नाउ कॉन्स्टिट्यूशन टू वर्क अच्छी बट दैट्स नॉट गुड लक्ष्मीकांत इज मोर देन इनफ आप किसी कथा अधिका भी दरकार ना बिकज एवरीवन नोज पॉलिटी पढ़ार अच्छी लक्ष्मीकांत पढ़ी दिया सब क्वेश्चन हो देन इकोनॉमिक्स सिंपल जदि किसी कहना पड़ो जदि श्रीराम आईएएस गोटे बुक थाए पियर्सन पब्लिकेशन तुम पढ़ी पार ना तो इकोनॉमिक्स जनरली इंपोर्टेंट हूँ करेंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजेट है ना जहाँ भी आसो रिलेवेंट आसो करेंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स आ सिंपल इनफ्लेशन होगा अनएम्प्लॉयमेंट है एगुड़ा सब जब तुमको नॉर्मल जिनस एंड इफ यू वांट कि मुझे वीडियो बनाए जमीक इनफ्लेशन होगा अनएम्प्लॉयमेंट होगा मनी मार्केट होगा कैपिटल मार्केट होगा जमी मनी मार्केट मनी सप्लाई होगा मनी सप्लाई M1 M2
M0 M3 ब्रॉड मनी इनफ्लेशन रहीगला जमीक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स एवं चेंज हो ड्रेस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा सिंपल इकोनॉमिक्स रो करंट अफेयर्स आउ होल आइडिया ऑफ व्हाट इज इकोनॉमिक्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तापरे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जमी जीडीपी रहीगला जीडीपी जीएनपी तर बेसिक प्राइस कौन फैक्टर कॉस्ट कौन ये सब सिंपल इजी जब तुम ठीक से पढ़ गोटे थर रिवाइज कले इकोनॉमिक्स विल बी वेरी मच क्लियर टू यू तो एतिक हूँ स्टैटिक सोर्स चार्टा some topics are less important ଯେମିତି କି କ'ଣ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी आपको आम बस घंटा घंटा मुझे देखी पिला घंटा घंटा आसी पढ़ते क्वेश्चन गोटे आसबार ना अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग कि आमको एग्जाम क्लियर करार अच्छी ना कि टॉप करार अच्छे प्रिलिम्स कि मतलब 100 ରୁ 100 क्वेश्चन केते क्वेश्चन दरकार कट ऑफ केते दउची 46 जाइतिला फास्ट 2020 रे एई सर भी केते जीवो एथर जीवो अराउंड 80 और 85 तो मोर गोटे टॉपिक मोर इंपोर्टेंट ताको फोकस करबा आवश्यक सो अदर इंपोर्टेंट सोर्सेस लाइक एनवायरनमेंट एबे रिसेंटली क्लाइमेट चेंज हो गला कि गवर्नमेंट पॉलिसी हो गला से एनवायरनमेंट रो इंपोर्टेंस बहुत बढ़ जाई छै ताको फोकस करबा निहात आवश्यक एनवायरनमेंट सोर्स कौन सिंपल एनवायरनमेंट रो गोटे सोर्स अछि वो गोटे होछि करंट अफेयर तो जनरली पढ़ा हम पड़िबो प्लस शंकर आईएस रो गोटे बुक शंकर आईएस मोर देन इनफ सब किछि अछि करंट अफेयर्स जनरली आम जापर कौन पढ़ू करंट अफेयर 3 प्रकार अच्छे गोटे डेली करंट अफेयर्स गोटे मंथली करंट अफेयर्स गोटे ईयरली करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स न्यूज पेपर आगे सॉफ्ट स्टडी ना पढ़ा पड़े आइदर इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू ओडिशा पे न्यूज जहाँ फॉलो कर इंपोर्टेंट चलती साइक्लोन आसीगला थोड़ा आसला गोटे क्वेश्चन साइक्लोन उपर कि नो काजुअलिटी साइक्लोन थिला ना एग्जाम भी कैंसिल होता सिंपल चित्ता आसला चित्ता चलती 2 वर्ष है चित्ता मिशन तो इंडिया गवर्नमेंट चलती कुनो नेशनल पार्क रे चित्ता 2 प्रकार इन एशियन चित्ता एंड आफ्रिकान चित्ता जो पढ़ाई पड़ो देन मंथली सिंपल गोटे सोर्स अच्छी व्हिच इज आई थिंक मु फॉलो करथली विजन आईएस रो करंट अफेयर्स सब दिए कंप्लीट भी करियो ईयरली पीटी 365 एटा हैंडी आसबो बिफोर एग्जामिनेशन बिफोर 1 मंथ और 2 मंथ ऑफ एग्जामिनेशन आगो पढ़ देले गोटे अथॉरिटी लगे जब तुम ए दुटा क्लियर कर देछ डेली जदि पढ़ुछ डेली पढ़ी नोट बनाउछ कि मंथली पढ़ी के भलसे प्रिपेयर कर सर्ट नोट बनाउछ देन आपको पढ़ के आवश्यकता ना जब तुम आपको स्किप कर देछ देन you should go for this is very much useful so some topics are as I said which you can do so key to success this is important source तो अच्छी प्लस बुक भी अच्छी कि पाठ पढ़ा लाभ कौन खटी मरा हो चाह पिया हो बुलिया जे हो पाठ पढ़ा तो किसी लाभ ना की टू सक्सेस कौन सर्ट नोट ये मुझे सोर्स कहली ये पढ़ा बहुत कष्ट हो रिवाइज करा जब तुम सर्ट नोट अच्छे जमी फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू वेरी 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 सर्ट एग्जांपल अर्थक्वेक इम्पोर्टेंट एवं अर्थक्वेक कौटी फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया फार ईस्ट रीजन इम्पोर्टेंट कौन पाई ऑयल पाई फार ईस्ट रीजन आउ कौन अच्छी क्रामलिन अच्छी क्रामलिन प्रोब्लेम कौन ना जापान आउ रशिया भितर डिस्प्यूट अच्छी सीज फायर एपर्यंत होनी फ्रॉम सेकेंड वर्ल्ड वार आउ कौन ना इंडिया हैज बीन इन्वेस्टेड 1 बिलियन रुपीज
କେଉଁଠି ନା ଫାର୍ ଇଷ୍ଟ୍ରେ ଅଏଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସନ୍ ପାଇଁ ତ ଆସିଗଲା ନା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆସୁଛି ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର ମିନ୍ସ କ'ଣ ଭୋଲକାନୋ। ଭୋଲକାନୋ ମିନ୍ସ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଭୋଲକାନୋ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭୋଲକାନୋର ମେଡିଟେରାନିଆନ୍ ସିରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ମେଡିଟେରାନିଆନ୍ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ବୋଲି, ଭିସିଭିୟସ୍, ଏଟନା, माउंट फुजी इम्पोर्टाट। दुई टाइप्स ऑफ वोल्कानो कौट आसी कौट पहुँचले तो एमती मैटेरियल दुई प्रकार केमती गोटे हूँ एसिडिक गोटे बेसिक। इंडिया रे कौन अच्छी बेसिक कौटी डेक्कन प्लेटू केबे हला एमती ही रिविजन करा जाए। आई एम गिविंग यू शॉर्ट एग्जांपल एमती ही रिविजन करा जाए। तो एमती रिविजन करूछ आई कैन आश्योर यू यू विल सेल थ्रू। आउ तुम यदि रिविजन ही कर सिलेबस ही कंप्लीट कर करंट अफेयर्स ही पढ़नु तो प्रॉब्लम हवा कथा ही हम। सो लेट्स सेकेंड नोट शॉर्ट नोट दरकार, रिविजन बार बार दरकार, बिफोर एग्जाम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी दरकार। जहाँ भी करो इफ यू आर गोइंग टू जिम इफ यू आर जिमिंग इफ यू आर रनिंग और इफ यू आर पेंटिंग किसी भी कर तुम सबुदिन करून अदिनिया मेघ भाया गोटे दिन कर देन यू आर नॉट गोइंग टू सिंपल। जो तुम तुम कंसिस्टेंसी ना देन छाड़ी दिया प्रिपरेशन नाइन तो खाली लक्षे पिला भाया फॉर्म भर देन प्रिलिम्स फेल हो पुणी गोटे वर्ष साइकल चलो। यू आर नॉट हियर फॉर दैट। यू आर ए डेमोग्राफिक डेबिटेंट ऑफ दिस कंट्री। ओके जो तुम गोटे फोकस कर तुम प्रीवियस किसी भूल कर this year should be your last year for examination आप तुम वीडियो है जो simple। don't get trapped into this vicious cycle of what? Vicious cycle of unemployment or unemployed, vicious cycle of what? Poverty। you are going through all of this, you don't have to do। okay so yeah thank you for this। I think this is helpful for you मन को साहाଯ୍य आसथिबो जदि भी किसी प्रॉब्लम अछि और एनीथिंग यू वांट आई शुड कवर जदि किसी प्रॉब्लम अछि देन लेट मी नो इन दिस कमेंट सेक्शन। कमेंट कम अछि फॉर कन्वर्सेशन। let's do comment then I can understand what are the problem we are facing। simple so you should not fear। फियर केतबेले करू जेतबेले इनफॉरमेशन न था। इफ आई कैन गिव ए स्मूथ पाथ यू कैन गो थ्रू। वी कैन सी सम पीपल आर क्लियरिंग दिस एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। व्हाई? बिकॉज दे नो हाउ टू गो थ्रू। सम पीपल आर देयर फॉर 10 years। आई हैव सीन सम पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर 10 years। यू शुड नॉट एट ऑल, नॉट इवन इन योर ड्रीम। it's very much difficult to be in this examination even for 1 year। you should not waste more than 2 years or maximum 3 years in this examination। one first attempt is enough। okay even if you are clearing the prelims then you will have a trust on you that I have cleared prelims। the prelims when fail then I can assure you your confidence will be in the grave। sorry if that happened this one you should avoid this one in the next attempt। I think this lecture has been helpful for you and let me know what I can do for you in the next